Well, I took initiation. I met Srila Prabhupada in 1969. I took initiation I moved into the temple in 1970, and I took initiation in 1971. And I have served in various capacities, my great good fortune. I was a temple president in Detroit, Michigan. We had a little preaching center in Ann Arbor, Michigan. I was the temple president there. University of Michigan. It was a lot of fun. And then I was the temple president in San Diego for 15 plus years. And I am a member. I became a member of ISKCON's governing body in 1987. And I took sannyas by Krishna's grace in 2014. So that's a little chronology. I've served as a member of the North American GBC, as the chairman of the North American GBC. I've served as the chair of the international ISKCON governing body. But as a general bottom line, I was a fool and a rascal in every sense of the word until I met Srila Prabhupada. So there is an introduction. Now, I wanted to do something just for fun, and let's see if we can do it. I put together, I do want to say a little history and philosophy, but I put together a little PowerPoint that I thought would be fun for you guys, because you gave me the theme of ISKCON around the world. So can you see this now? Yes, Maharaj, we can see Maharaj. You see Lord Chaitanya chanting japa. Yes, Maharaj. Maharaj, with your permission, Maharaj will have to translate also, Maharaj, in Hindi. Oh, I'm very sorry. So go ahead and translate. Do we have to start all over again? I'll do, Maharaj. Yes, Maharaj. I'll do it, Maharaj. You can say this. You can say that, we'll do it again. I met the devotees and Srila Prabhupada in 1969. तो परम पूजनीय बद्रीनारायण स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी के और भक्तों के संपर्क में 1969 ईस्वी में आए थे. I moved into the temple in Laguna Beach, California in 1970. और 1970 में लगुना बीच कैलिफोर्निया में जो मंदिर है ISKCON का, वहां पर महाराज फिर प्रवेश किए. I took initiation in 1971. और 1971 में महाराज की दीक्षा हुई. I served as a temple president in Detroit, Michigan, and in Ann Arbor, Michigan. और फिर महाराज ने वहां पर मंदिर के अध्यक्ष के रूप में डिट्रॉयट, मिशिगन और इसमें मिशिगन में वहां पर उन्होंने सेवा दी अपना. I became a member of ISKCON's governing body, international governing body, in 1987. और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो जीबीसी है उसके सदस्य बने महाराज 1971 में. And I took sannyas by Krishna's grace in 2014. और 2014 में महाराज ने भगवान की कृपा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया. But the bottom line is that I was a conditioned soul floundering in the material nature until I met Srila Prabhupada. और महाराज बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि मुख्य बिंदु यह है कि मैं एक बद्ध जीवात्मा था और भौतिक संसार में भ्रमण कर रहा था, गोते खा रहा था, जब तक कि मैं श्री प्रभुपाद से नहीं मिला. So we're going to do a quick little PowerPoint first. तो महाराज पावर पॉइंट दिखाएंगे. उसके पहले ऑल टुगेदर विल वेलकम महाराज बाय चैंटिंग वन टाइम हरे कृष्ण महामंत्र टुगेदर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 Hare Hare. Okay, can I get going now? Please. So my theme was Rathayatra, history and around the world. तो आज का जो शीर्षक है कि रथ यात्रा कैसे पूरे विश्व में आई. I also want to speak a little philosophy. और मैं कुछ सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूँ. Prabhupada said we should know what we're doing and why. प्रभुपाद जी कहते थे कि हमको जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं.
So, but we'll start with this little Rathayatra, this little PowerPoint. So here we go. तो अभी यहाँ पर हम एक महाराज दिखाएंगे हमें पावर पॉइंट, उसके द्वारा हमें बताएंगे कथा. So here we have Sri Chaitanya Mahaprabhu chanting in Puri. तो यहाँ पर देख सकते हैं छवि है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जप कर रहे हैं. Now here's the beautiful Jagannath temple. और यहाँ पर बहुत सुंदर प्राचीन जो मंदिर है जगन्नाथ जी का वो हम देख सकते हैं. Built in a previous yuga by Maharaj Indradumna. और इंद्रदुम्न महाराज के द्वारा ये पिछले युगों में बनाया गया मंदिर है ये. Even in Puri, the Indian archaeological study, they say that the Jagannath temple is 2000 years old. तो भारत में जो सर्वेक्षण विभाग है उन्होंने भी ये घोषणा की है कि कम से कम ये 2000 वर्ष पूर्व मंदिर है. But then they say that the 2000-year-old temple is built on a foundation of a previous temple of unknown origin. लेकिन फिर उन्होंने बाद में ये घोषणा की कि जो 2000 वर्ष पूर्व ये मंदिर बनाया गया है उसकी जो आधारशिला है वो बहुत प्राचीन जिसका कोई समय नहीं कह सकते उस पर बनाया गया है. And you see here on my right, you see this red flag. That flag was originally installed by Lord Brahma. और जो दाहिनी ओर जो छवि है जिसमें एक झंडा लगा हुआ है, ये झंडा वास्तविक रूप में प्राचीन काल में शुरुआत में आरंभ में ब्रह्मा जी ने लगाया था. And of course, you all know this scene. This is the beginning of the blissful Rathayatra. और ये सब महाराज कह रहे कि हम सब देखा होगा कि किस प्रकार से ये शुरुआत है, आरंभ है रथ यात्रा की जब होती है वहां पर. तो just as a little scenery, this is the whole cart. These are rare photos of them selecting the wood for building the cart. So this is one of the trees that they're going to make into a wheel for the Jagannath cart. तो ये जो यहाँ पर छवि दिखाई जा रही है ये बहुत ही दुर्लभ छवि है जिसमें जिस पेड़ की लकड़ी से दारू ब्रह्म से बनाते हैं भगवान को उसको किस प्रकार निकालते हैं उसकी छवि है ये. And here they are making the wheel, and here's the finished product. और यहाँ पर ये रथ का पहिया बना रहे हैं और ये रथ का पहिया हम देख सकते हैं जो बन के तैयार है. Now this is the first Rathayatra held outside of India in San Francisco, 1967. और ये महाराज ने बहुत सुंदर छवि दिखाई है. 1967 में पहली रथ यात्रा भारत के बाहर सैन फ्रांसिस्को में हुई थी. Prabhupada said one time, Lord Rama conquered Lanka with monkey soldiers. श्री प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि भगवान श्री रामचंद्र वानर की सेना से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी. Prabhupada said, and I am working with monkey disciples. और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जो है वो वानर शिष्यों के साथ में कार्य कर रहा हूँ. It's absolutely amazing what Prabhupada was able to accomplish. तो ये बहुत आश्चर्यचकित है जो श्री प्रभुपाद जी ने करके दिखाया. So from this little seed, here's the first Rathayatra outside of India held by hippies in San Francisco. Here's the first. Remember this simple scene. तो महाराज कह रहे हैं कि इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि ये वो छवि है जो पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के बाहर जो हिप्पी थे प्रभुपाद जी के संग में जो आए उनके साथ मनाया गया. And of course, we all know the great hero Jayananda Prabhu, Mr. Rathayatra. और हम सब ने सुना है इनके बारे में श्रवण किया है श्रीमान जयानंद प्रभु वो जो कि रथ यात्रा के बिल्कुल वो हीरो समझे जाते थे. He organized the first big Rathayatra in San Francisco, the first one in Los Angeles, and the first one in New York City. और इन्होंने ही प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में पहली यात्रा रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में, पहली रथ यात्रा लॉस एंजलिस में और पहली रथ यात्रा न्यूयॉर्क सिटी में निकाली थी. You can invite me back sometime. I'll give you a class all about Jayananda, a genuine ISKCON saint. श्योर महाराज, श्योर. इट विल गुड फॉर्च्यून महाराज कह रहे हैं कि हम लोग कभी फिर महाराज से श्रवण करेंगे जयानंद प्रभु के बारे में
कैसे वो साधु, उनका जो व्यवहार था, उनके बारे में हम श्रवण करेंगे महाराज से। So here is the San Francisco Rathayatra, 1970. I was at this Rathayatra. और ये 1970 में सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा हो रही है और महाराज उस समय वहां पर विद्यमान थे, आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व। So you see how they've gone from that little cart on the back of a truck. Now we have a big cart. तो अब देख सकते हैं कि पहले छोटा सा रथ था, अब देख सकते हैं कितना बड़ा रथ बन के यहाँ पर तैयार है 1970 में। Here's another scene of the crowd. This is through Golden Gate Park. Here's the Rathayatra cart. और ये एक दूसरा दृश्य है जो गोल्डन पार्क के पास में, और यहाँ पर सामने से रथ ये आ रहा है। So that's 1970 San Francisco. ये 1970 सैन फ्रांसिस्को की बात है। Now here is in Bangladesh 3 years ago. और ये 3 वर्ष पूर्व बांग्लादेश ढाका में ये रथ यात्रा की जा रही है। Right down the main street of Old Dhaka. ये जो पुराना ढाका है उसी के मुख्य सड़क पर ये रथ मुख्य पथ पर ये रथ खींचा जा रहा है। And here is Los Angeles Rathayatra. और पुनः ये लॉस एंजल्स का जो रथ यात्रा है कैलिफोर्निया में, वहां पर किया जा रहा है। The police give us a permit every year. They say it's the most peaceful day of the whole year in the city of LA. When we hold our Rathayatra, it's the most peaceful day of the year. तो पुलिस यहाँ पर ने छूट दे रखी है और वो कहती हैं, पुलिस कहती है यहाँ पर कि पूरे वर्ष का सबसे शांतिपूर्वक दिन ये रथ यात्रा होता है जो लॉस एंजलिस में मनाई जाती है। The police officer told us the only problem is that all my officers want to be on duty that day so they can see the festival. महाराज कह रहे हैं कि एक ही समस्या है कि वो पुलिस कह रही थी कि सभी उनके जो ऑफिसर हैं वो ड्यूटी पे होना चाहते हैं क्योंकि उस दिन वो सब लोग देखना चाहते हैं रथ यात्रा। Here's a picture. This is just one section. There's about 40 booths like this. So this gives you an idea of the colorful scene. और ये उस जगह का एक दृश्य है और इस तरह के 40 ऐसे टेंट बनाए जाते हैं, बूथ, और बहुत रंगीले रंग बिरंगे देखिए आप यहाँ पर। You told them there's about 40 booths like this and a big stage, right? यस महाराज, तो 40 यहाँ पर बूथ और एक बड़ा स्टेज बनता है। Just gives you a taste. तो इससे हमें मालूम होता है स्वाद कि किस प्रकार से मनाते हैं रथ यात्रा यहाँ पर। And this is, you know, Chaitanya Mahaprabhu's movement is not stereotype. तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये अभियान है ये एक ही तरह से सब जगह पर मनाया जाए ऐसा नहीं है। Chaitanya Mahaprabhu's mission is based on the principle of delivering mercy. चैतन्य महाप्रभु का ये संघ जो है ये कृपा की वितरण करने में इसके ऊपर आधारित है। So some smarters will say, oh, you can't do Rathayatra at night. तो कोई स्मार्ट ब्राह्मण कह सकते हैं कि नहीं, आप रात्रि में रथ यात्रा नहीं कर सकते। But this is at a famous festival, a music festival in Australia, and over 100,000 people are there at night when they do this nighttime Rathayatra. तो ये ऑस्ट्रेलिया की छवि है जहां पर कि रात्रि में लगभग 1 लाख लोग आते हैं रथ यात्रा में और रात्रि के समय ये रथ यात्रा होती है। So we've seen Dhaka, we've seen LA, we've seen Australia. तो हम लोगों ने ढाका का देखा, सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया और लॉस एंजलिस यहाँ की रथ यात्रा देखी हमने। Now this is the Rathayatra. You see the 3 beautiful carts. This is going down 5th Avenue in New York City. और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर 3 रथ बने हुए हैं, ये न्यूयॉर्क सिटी में ये रथ यात्रा हो रही है। Prabhupada said it is the most, 5th Avenue is the most important street in the most important city in the most important place in the world. प्रभुपाद जी कहते थे कि 5th एवेन्यू जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण शहर न्यूयॉर्क सिटी में और सबसे महत्वपूर्ण जगह पर जो कि अमेरिका में। And you have to consider that Prabhupada came to New York City with absolutely nothing, practically like a homeless beggar. और श्रील प्रभुपाद जब आए थे अमेरिका में, तो हमें ज्ञात होना चाहिए न्यूयॉर्क सिटी में, तो उनके पास कुछ भी धन नहीं था, लगभग वो एक प्रकार से भिक्षुक के रूप में आए थे।
And here we are, so many years later, his movement is pouring down Fifth Avenue with 3 beautiful carts and thousands of participants. It is quite a mystical thing. और कुछ वर्षों के पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं कि हजारों हजारों लोग और इतने बड़े बड़े रथ, बड़ा वैभव पूर्वक ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये बड़ा ही रहस्यमय है। This is in Hong Kong, in China. और ये हम देख सकते हैं, ये हांगकांग, चाइना का दृश्य है ये। They also do it in night because that's when the most people are there. और ये भी रात्रि में रथ यात्रा करते हैं क्योंकि उस समय ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। I don't know if you can see way in back. You see the Rath cart way back here. यस महाराज, वी कैन सी महाराज। तो पीछे हम देख सकते हैं, महाराज बता रहे हैं कि पीछे वहां पर रथ आ रहे हैं, देखिए पीछे। And here's a close up. Here's the crowd. Here's the cart. This is Hong Kong, Chinese. Imagine. और ये पास से दृश्य लिया गया है, ये हांगकांग चाइना का दृश्य। सोचिए, वहां पर भी भगवान जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में लेके जा रहे हैं। This is in Russia. In Russia, they have over 64 Rathayatras a year in different cities. 64 Rathayatras a year. This is just one of their Rathayatras in Russia. जय। तो महाराज बता रहे हैं कि रशिया में 64 रथ यात्रा पूरे वर्ष में मनाई जाती है अलग अलग स्थानों पर, और उनमें से एक रथ यात्रा का दृश्य है। यहाँ पर इतने लोग देखे इकट्ठे हुए हैं। You see the sign here in Russian? हाँ, तुम्हारा बता रहे कि यहाँ पर देखिए रशियन में जो है भाषा में कुछ वहां पर कुछ ऐसे इंगित किए गए हैं चित्र ऐसे। Yeah, here it is in Russian. Okay, now we're almost done. This is in Bali in Indonesia, Muslim country again. और ये यहाँ पर बाली, इंडोनेशिया, जहाँ पर की जो मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर भी रथ यात्रा मनाई जा रही है। So from the original festival in Puri to the little festival on the back of a truck to all over the world, Jagannath Rathayatra. तो महाराज बहुत सुंदर रूप से हमें दृश्य दिखाया। जगन्नाथ पुरी से रथ यात्रा शुरू हुई, उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि कैसे छोटे से एक ट्रक के पीछे प्रभुपाद जी ने शुरुआत किया 1967 में सैन फ्रांसिस्को में। उसके पश्चात अब पूरे विश्व में ये रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। This is in London, in front of the National Gallery on the left, and then going down Piccadilly Street in downtown London. और ये लंदन का रथ यात्रा का दृश्य है, जहाँ पर की बाएं तरफ जो है वो नेशनल गैलरी की ओर वहां से रथ यात्रा जा रही है, और दाहिनी तरफ जो है वो पिकेडिली स्ट्रीट जो है वहां पर जा रही है। We're going to end here, but Srila, it shows you Prabhupada is a small child. Here's Prabhupada as a small child performing Rathayatra. और इस दृश्य में हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी एक छोटे बालक के रूप में, और तभी वो रथ यात्रा का उत्सव मना रहे थे छोटे से बालक के रूप में। And here we see him sitting on the cart, sailing down one of the wonderful Rathayatras around the world. और दाहिनी ओर वो बैठे हुए हैं एक बहुत बड़े ऐसे रथ यात्रा जो उत्सव हो रहा है उसमें खुद बैठे हुए हैं प्रभुपाद जी। So here's Prabhupada blissfully chanting. और यहाँ पर रथ यात्रा के समय श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से कीर्तन कर रहे हैं। This was at the San Francisco Rathayatra. और ये छवि है सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा की। And here we have Prabhupada San Francisco again. Let everyone chant and be happy. और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करें और प्रसन्न रहें, और प्रभुपाद जी स्वयं नृत्य कर रहे हैं रथ यात्रा के समय। I like this picture because you have black and white and Indian and Chinese and householder and grihasta, and everyone's happy at Prabhupada's lotus feet. महाराज कह रहे कि ये छवि मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग, काले, गोरे, गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, सभी लोग श्री प्रभुपाद जी के चरण कमलों के शरण में प्रसन्न हैं। So this is a rare shot of the Jagannath deities at the Gundicha temple when they go there to be repaired. तो ये बहुत ही दुर्लभ छवि है गुंडीचा जो मंदिर है वहां पर, जब भगवान जाकर के जब वहां पर कुछ वो विश्राम करते हैं उस समय जब उनका वहां पर इलाज होता है उस समय की छवि है ये। And we can end here with a blissful shot of the Jagannath temple
in Puri. और ये हम देख सकते हैं, बहुत सुंदर दृश्य है ये जगन्नाथपुरी के एक द्वार से ये उनके मंदिर का। This is the Nrsinga Dwara, the Nrsinga gate. Here's the Garuda Stamba where Chaitanya Mahaprabhu used to stand and cry. तो ये नरसिंह द्वार है और यहाँ पर ही अंदर गरुड़ स्तंभ के पास चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर के वो आलोपन किया करते थे और क्रंदन किया करते थे। Okay, we can end there and let's go back to gallery view. Okay, so I wanted to say a little philosophy as well. तो महाराज को सिद्धांत के बारे में हमें बताएंगे। The esoteric or the internal reason for Chaitanya Mahaprabhu and the meaning of Rathayatra. तो जो इसका कारण है, आंतरिक कारण चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से रथ यात्रा के समय उनकी किस प्रकार की अनुभूति होती है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। And that is that Srimati Radharani, Krishna had gone on, he was living in Dwarka, and they were meeting at Kurukshetra at the time of the solar eclipse. तो श्रीमती राधा रानी जब इसमें वृंदावन में है सभी लोग और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जा चुके हैं और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिन उनको ज्ञात हुआ कि कृष्ण वहां पर आ रहे हैं, सभी लोग वहां पर जाते हैं उनसे मिलने के लिए। And she was feeling deep separation as all the residents of Vrindavan were feeling separation. और वृंदावन वासी बहुत ही विरह की भावना में इसमें बिल्कुल व्याकुल हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। So the Jagannath Rathayatra commemorates Srimati Radharani bringing Krishna back to Vrindavan, at least within her heart. तो जगन्नाथ रथ यात्रा ये उत्सव हमको स्मरण कराते हैं किस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को वापस लाना चाहती हैं वृंदावन धाम में और हम सब के लिए अपने हृदय में। Now, frankly, this is far beyond our pay grade, as they say. और महाराज कह रहे हैं कि निश्चित रूप से देखा जाए तो ये हम लोग के जो समझ है उससे परे है ये। But we can be in that mood of we're pulling Krishna into our heart, into our life, and let us just have Krishna at the center of our life. So we can pray like that on this day. लेकिन आज के दिवस पर हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी भगवान को कम से कम अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने मन में उनको आमंत्रित करें। There is often the challenge, certainly in the West, well, what do you have to offer that's different? We're loving God, you're loving God. What is the difference? Why do we need you here? Go back to India and help them. Why do we need you here? तो पाश्चात्य देशों में इस प्रकार की चुनौतियां रहती हैं। लोग कहते हैं कि आप भगवान को प्रेम करते हो, हम भी भगवान को प्रेम करते हैं, हमें आप ही आवश्यकता क्या है? आप भारत में जाइए, हम यहाँ पर अच्छे से अपने आप प्रेम कर रहे हैं भगवान को। And in India, you have so many, oh, I'm doing all the rituals, I'm bowing down, I'm doing all the priyashchitas and all the smriti, I'm doing all the principles, and then what do I need? What do you have to offer to me? और भारत में जाएं तो वहां पर लोग कहते हैं कि देखिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कर्म कांड कर रहा हूँ, सारे प्रायश्चित कर रहा हूँ, आपकी क्या आवश्यकता है? And Srila Prabhupada talks about the rare mood of Vrindavan. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी वो बहुत दुर्लभ जो भाव है वृंदावन का, व्रज का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। What is that special mood of the Brajvasis that manifests at Kurukshetra for the first Rathayatra? तो क्या भाव है ब्रजवासियों का जो प्रकट होता है जो प्रथम रथ यात्रा कुरुक्षेत्र में? One, the Dwarka mood is Aishwarya Bhav. तो एक तो द्वारका का जो भाव है वो ऐश्वर्य भाव में है। And in the Western theology, they call this the sense of creatureliness, that we are a small creature and God is big and powerful. और जैसे कि पाश्चात्य देशों में जो सिद्धांत बताते हैं इस प्रकार से कि हम लोग बहुत छोटे से प्राणी हैं और भगवान बहुत विशाल हैं। And what is the business of the small? They're always asking of the big.
और क्या स्थिति होती है जो छोटे होते हैं हमेशा बड़े से मांगते रहते हैं. They're always asking, God give me this, God give me that. I want God as a big Amazon in the sky. तो हमेशा वो मांगते रहते हैं जैसे कि अमेज़न जो होते हैं सबके ऑर्डर सप्लाई करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी आकाश में ऐसे हमारे ऑर्डर की सप्लाई करने वाले हैं. Prabhupada gives the example that the shopkeeper goes home at night, puts his head on the pillow, and is just about to go to sleep. प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कैसे एक दुकानदार जब जाते हैं रात्रि में अपने घर में सोने के लिए, वो सिर्फ सोने ही वाले हैं. And he thinks, oh, did I remember to lock the back door of my shop? Did I remember to lock the back door? कि क्या मैं स्मरण किया कि मैंने अपना जो दुकान है उसको बंद किया, जो पीछे का रास्ता है उसको बंद किया मैंने. And he's praying to God, oh God, please, 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 did I lock the back door? वो भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान कृपा करके मुझे याद नहीं आ रहा है, आप रक्षा करिएगा कि मैंने दुकान का दरवाजा बंद है कि नहीं है. Now, simultaneously, there is a thief who goes out at night. और साथ ही साथ एक चोर भी है, वो भी जाता है रात में साथ में. And somehow or other, by the trick of fate, he's become a pauper and he has to steal to maintain his children. और ये इनके कारण उसको कुछ चोरी करनी होती है क्योंकि जिससे कि वो अपने परिवार का ध्यान रख सके. Do you know what he's praying, the thief? क्या आप जानते हैं महाराज पूछ रहे हैं कि वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? He's praying, oh God, please, I hope someone left their back door of their shop open. तो वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई ना कोई अपने दुकान का दरवाजा खोलना बंद करना भूल गया हो, ऐसा करें आप. So the shopkeeper is praying to God, please have my door locked. तो दुकानदार प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे दरवाजे बंद हो दुकान के. And the thief is praying to God, oh please have the back door unlocked. और चोर प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके दरवाजा खुला हो पीछे वाला. Prabhupada said, and in this way, Krishna is perplexed. प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भ्रमित रहते हैं. In other words, everyone's praying for so many things, and that Krishna's business is to satisfy all of our desires. दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सभी लोग अपने अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान को सबकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, ऐसा समझते हैं. The Christians pray, and I'm not picking on the Christians, the Hindus, everybody, the Muslims, everyone's praying. The Christians pray, oh God, give us this day our daily bread. तो महाराज कह रहे हैं कि हम सबके लिए देख सकते हैं, चाहे मुस्लिम भाई हों, ईसाई भाई हों, सभी लोग प्रार्थना करते हैं. जैसे कि ईसाई भाई प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मेरे प्रतिदिन का जो आहार है वो मुझे मिलता रहे. Prabhupada said that's not really love of God, it's love of bread. प्रभुपाद जी कहते थे कि ये भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ये तो रोटी के प्रति प्रेम है. And he compares, now Prabhupada said on one hand it's good. We're recognizing that we're depending on God. We depend on Krishna. Okay, that's good. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि एक दृष्टिकोण से ठीक है कि कम से कम वो भगवान के ऊपर निर्भर तो है. But what is the Vrindavan? What is the Brajbasi mood? लेकिन ब्रज का, वृंदावन वासी का उनका भाव क्या है? What is the intimate loving mood exemplified by Chaitanya Mahaprabhu, Rathayatra, bringing Lord Jagannath, bringing Krishna back to Vrindavan? What is that mood? तो आंतरिक प्रेम का जो भाव है जो चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रजवासी भगवान को वापस लेके आने के लिए वो भाव क्या है? Mother Yasoda is thinking, if I don't feed Krishna, Krishna will become sick. Krishna may become weak. यशोदा माँ सोचती हैं कि अगर मैं भगवान को आहार नहीं दूंगी, उनको दूध नहीं पिलाऊंगी, तो वो कमजोर हो जाएंगे, वो शक्तिहीन हो जाएंगे. So one mood is, oh God, you have to feed me. तो एक भाव है कि भगवान आपको मेरा आहार देना है, मेरा पालन पोषण करना है. But the Brajbasi mood is so much sweeter. It's, oh, I need to serve Krishna. I have to feed my little Krishna. लेकिन ब्रजवासियों का जो भाव है बहुत मधुर कि मुझे भगवान की देखभाल करनी है, मुझे उनका पालन पोषण करना है. Just as a sidelight,
when Prabhupada was in Los Angeles, many of the artists were there painting pictures for his books. तो महाराज बता रहे हैं कि अलग से कि किस प्रकार प्रभुपाद जी जब लॉस एंजलिस में थे तो उन्होंने एक चित्रकार को बनाया कि कैसे पिक्चर छवि बनानी है. And they painted a picture of Gopal, Krishna as a cowherd boy, but he had big muscles. तो उन्होंने छवि बनाई कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक ग्वाल बाल हैं, लेकिन उनकी जो शरीर है बड़े पुष्टि वाले शरीर है, बलशाली है. Prabhupada said, no, he's a little fat from eating Mother Yasoda's butter. तो प्रभुपाद जी कहा कि नहीं, वो थोड़े से उनको आप ऐसे थोड़ा मोटा दिखाइए क्योंकि वो श्री माँ के मक्खन को खा के मोटे हो चुके हैं. So this is Krishna Prema. This is what Chaitanya Mahaprabhu came to give. This sweet, intimate, loving relationship with Krishna, with God. तो ये आंतरिक जो प्रेम है कृष्ण के साथ में, यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए थे. One time Prabhupada was asked, what is the difference between Vishnu, Narayan, and Krishna? एक बार श्री प्रभुपाद जी से पूछा गया प्रश्न कि नारायण, विष्णु और भगवान श्री कृष्ण में क्या अंतर है. The answer Prabhupada gave, on one hand, there's no difference. Vishnu, Krishna, there's no difference. तो एक दृष्टिकोण से कोई भी अंतर नहीं है तीनों में तत्व के अनुसार. But the difference is in the mood and aspect. लेकिन प्रभुपाद जी बोला कि जो अंतर है वो उनके भाव और रस में है. Prabhupada said that Narayan is God in the office and Krishna is God at home. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नारायण जो है वो जैसे ऑफिस के हैं भगवान, और कृष्ण जो है वो अपने घर में जैसे होते हैं वो घर के भगवान. When Krishna is relaxed, when he's with his most intimate, loving friendship, when he reveals his real nature, that's Krishna in Vrindavan. तो जब भगवान बिल्कुल विश्राम करते हैं अपने ऐश्वर्य से विहीन होकर के, जब अपने आप को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो वो वृंदावन में है भगवान श्री कृष्ण. And that is the mood of Rathayatra that let us come to that loving relationship with Krishna, that intimate Brajbasi mood. तो यही भाव होना चाहिए रथ यात्रा के दिन पर कि ब्रजवासी जैसे उनका भाव था कि भगवान कृष्ण को आंतरिक रूप से प्रेम के द्वारा वापस लेके आना. I'm going to tell you a joke I heard the other day. तो महाराज एक हमें यहाँ पर हास्य परिहास बताएंगे जो उन्होंने सुना था कुछ दिन पहले. And I think it's bona fide. Prabhupada liked a nice joke. महाराज कह रहे कि ये प्रमाणिक है क्योंकि प्रभुपाद जी भी ऐसे अच्छे जो मजाक थे वो करते थे. Some other time I can share. So Prabhupada you listen to Prabhupada's tapes. He tells a lot of nice jokes. They all have a point. They're not frivolous, but they have a point. तो श्री प्रभुपाद जी कई बार ऐसे अच्छे हास्य परिहास करते थे जिसमें बहुत अच्छे बिंदु भी हुआ करते थे. वो खाली ऐसी हंसी मजाक नहीं. यस महाराज. So we're talking about the intimate mood of Vrindavan, and why is that a rare gift to the world? तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आंतरिक भाव जो वृंदावन का है और वो क्यों बहुत दुर्लभ है इस पूरे संसार में. What is the special gift of Srila Prabhupada, of Chaitanya Mahaprabhu, of ISKCON? What is our special gift to the world? और वो विशेष उपहार क्या है चैतन्य महाप्रभु का, श्री प्रभुपाद जी का और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो हम संसार को देना चाहते हैं. So here's the joke. You ready? तो अब महाराज बताएंगे मजाक. क्या आप सब तैयार हैं? Yes, So Maharaj. there's a Brajbasi, a nice Vrindavan Bhakta, and he's invited to a religious convention in Rome by the Pope. तो एक वृंदावन वासी उनको एक धार्मिक ऐसे वार्तालाप के लिए उनको रोम में बुलाया गया. So he's been invited by the Pope and different speakers. There's Muslim and Jewish and Catholic and Christian. They're all speaking. और रोम के जो पोप थे उन्होंने उनको बुलाया था, आमंत्रित किया था, और वहां पर जो मुस्लिम और ईसाई इन सभी के जो वहां पर धार्मिक जो वक्ता थे वो लोग वहां पर कुछ वार्तालाप कर रहे थे. And our Krishna Bhakta explains nicely that God is not formless, but he's the form of all beauty. He's Shama Sundar.
You know, Ham Sarvasha Prabhaho, Krishna Stu Bhagavan Swayam. He explains everything very nicely. Our Vrindavan Bhakta at this conference. और जो वृंदावन से गए थे जो भक्त कृष्ण भक्त वो बहुत सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे थे कि भगवान निराकार नहीं है, उनका बहुत सुंदर श्याम सुंदर रूप है और बहुत अच्छे से उनका वर्णन कर रहे थे. And the Pope is very impressed. He thinks, oh, this is very nice. I've never heard this before. जो पोप थे रोम के वो बड़े ही उनसे आकर्षित हुए और उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसे पहले ऐसा वर्णन नहीं सुना था. So the Pope invites our Braj Bhakta back to his quarters for private talk. और तब उन पोप ने जो है वो ब्रजवासी भक्त को अपने घर में बुलाया कि जिससे कि कुछ वो व्यक्तिगत रूप से कुछ वार्तालाप कर सके. And the Brajbasi Bhakta notices that the Pope has a solid gold phone. और तब ब्रजवासी ने देखा कि उनके पास पोप के पास में एक बहुत सुंदर ऐसे स्वर्ण का बना हुआ फोन था उनके पास, टेलीफोन. And the Pope says, yes, this is my direct line. I have a direct line to God. उन्हें कहा कि ये मेरा डायरेक्ट लाइन है, भगवान के साथ में मैं बात करता हूँ इससे. And he says to our Braj Bhakta, you want to try it out? और उन्हें बोला ब्रजवासी भक्तों कि क्या आप प्रयास करना चाहेंगे भगवान से बात करने के लिए. But the Pope says, don't talk very long. It's very, very expensive. Don't talk long. तो उन्होंने कहा पोप ने उनसे ब्रजवासी भक्त से कि देखिए आप ज्यादा लंबी बात मत करिएगा क्योंकि ये इसका जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा आएगा. So our Braj Bhakta, he has no desire. He just offers some prayers. Govindam, Adipurusham, Tamaham, Bhajame, and he's done. Short call. तो उनके पास ब्रजवासी भक्त के पास कोई इच्छा नहीं थी अपनी, वो खाली भगवान का बस गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि उनका गुणगान करके छोटी सी बात करके फोन रख देते हैं. And the Pope says, okay, very good. He said, it cost $1,000, but don't worry, I'll pay for it. तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आपने कम बात की, इसका खर्चा सिर्फ $1,000 आएगा, वो मैं दूंगा, आप चिंता मत करिए. Now some time goes by and later on the Pope is visiting India. और कुछ दिन ऐसे व्यतीत हो जाते हैं, उसके पश्चात जो पोप होते हैं उनको भारत जाने का अवसर प्राप्त होता है. And he comes to Vrindavan and he visits our Braj Bhakti, his friend. He comes and meets our Braj Bhakta in Vrindavan. और वो भारतवर्ष में आते हैं और वृंदावन में जाते हैं और वही ब्रजवासी भक्त उनसे मिलने जाते हैं. And our Vrindavan Bhakta, he's put in a gold phone too. और जो वृंदावन के जो भक्त हैं ब्रजवासी, उनके घर में भी एक ऐसे ही सोने का फोन रखा होता है. He said, I saw your phone, so I also have a phone. We have a line to God. तो कहा कि मैंने आपका फोन देख करके आया था, तो हमारे पास भी फोन है और हम भी भगवान से बात करते हैं यहाँ पर. So the Pope said, oh, can I use it? I've got so many questions. I've got some real problems. Can I use it? तो उन्होंने कहा कि क्या मैं इसको उपयोग कर सकता हूँ, मुझे कई जिज्ञासा है, कई प्रश्न है, भगवान से पूछना है, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ. Our Braj Bhakta, of course, go. ब्रजवासी भक्त ने बोला कि बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से बात करिए आप. And the Pope has this anxiety and that anxiety, and everybody's fighting, and he's got this doubt and that. And before he knows it, he's been on the phone for an hour. और उनके पास इतनी चिंताएं थी, इतनी उनको बात करनी थी, इतनी जिज्ञासाएं थी, ऐसे बात करते करते घंटे बीत गए. And the Pope says, when he gets off the phone, he says, oh, geez, I'm sorry. It must be so expensive. Don't worry, I'll pay for it. और ऐसे बात करते करते घंटे बीत गए तो वो पोप जो है बड़े चिंतित हो गए. बोले कि अरे कई घंटे हो गए, मैं फोन रखता हूँ, आप चिंता मत करिए, जितना भी धन आएगा इसका लक्ष्मी वो मैं दूंगा. Pope said, tell me how much. It must be $100,000. Just tell me how much it is. तो पोप ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा होगा, तो लाखों डॉलर में होगा, आप मुझे बताइए कितना धन है, मैं दूंगा. And our Krishna Bhakta says, it's only $1. तो जो कृष्ण भक्त है उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस $1 लगेगा, बस का $1 खाली. Pope says, how is that possible? वो बोले कैसे संभव हो सकता है ये. And our Vrindavan Bhakta says, no, in Vrindavan, it's just a local call. तो वो कहते हैं कि वृंदावन के भक्त बोले कि ये वृंदावन है और वृंदावन में जो कॉल होती है भगवान को, लोकल कॉल है वो. So the point is that this intimate, humble, serving mood, this is the unique gift of Chaitanya Mahaprabhu. तो यहाँ पर मुख्य बिंदु है कि इस प्रकार से सरल, बहुत सरल हृदय से
बहुत आंतरिक भाव से भगवान को प्रेम करने का जो भाव है, यही वृंदावन का भाव है और चैतन्य महाप्रभु यही देने के लिए हमें आए थे। I meet people all the time. Well, let me say this first. The first time I met, well, actually, it was the third time I met Srila Prabhupada. Prabhupada was cutting some fruit with a knife, cutting an apple with a knife. तो महाराज जब तीसरी बार श्रील प्रभुपाद से मिले, उसमें प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और अपने फल को चाकू से काट रहे थे। And I asked Prabhupada a question that had been on my mind for a long time. तो मैंने प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछा जो मेरे मन में कई दिनों से था। Because it's a question, what do we do in this material world? प्रश्न ये था कि क्यों भौतिक संसार में क्या करते हैं हम, क्यों यहाँ पर आए, क्या कर रहे हैं हम? Is this material world made for us to enjoy? We should just take everything and try to enjoy as much as possible. Is that why God made this world for us? तो क्या यहाँ पर हम भोग करने के लिए आए हैं कि सब कुछ बस भोग करते रहें? क्या इसलिए भगवान ने ये भौतिक संसार बनाया है? Of course, the argument is, if God made this world for us to enjoy, why isn't it more enjoyable? This is the best God could do. Birth, death, disease, old age. So that doesn't seem to make sense that God has made this world for us to enjoy. तो यहाँ पर ये मुख्य बात है कि अगर भोग करने के लिए है तो फिर यहाँ पर क्यों ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस प्रकार की चीजें यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इसे तो भोग नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से करने के लिए नहीं बना हुआ है। The alternative, the other side of the coin, is that this world is profane, it's corrupting, it's Maya, it's illusion, and we should have nothing to do with it. और दूसरा इसका दृष्टिकोण हो सकता है कि नहीं, ये तो यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार है, माया है और बहुत समस्याएं हैं और उससे बिल्कुल स्पर्श नहीं करना है, दूर रहना है। And you find this in spiritual traditions around the world. You have the yogis who go off to the cave in the Himalayas. और ये हम देख सकते हैं कि जितने भी धार्मिक जो विचारधारा हैं वो इस प्रकार से होते हैं। कुछ लोग योगी हैं, वो बिल्कुल हिमालय पे दूर रहते हैं, बिल्कुल संसार से दूर। You have Christians who go off tiny islands and they don't have anything to do with the outside world. और कोई ऐसे ईसाई भाई भी होते हैं जो ऐसे छोटे से द्वीप पर जाते हैं, टापू पर, जहां पर कोई संसार से संपर्क नहीं, वहां पर रहते हैं। So is this world, here's the two options. Is this world meant for us to enjoy, or are we supposed to renounce and cut ourselves off from the world? तो ये दो चयन हमारे पास में है, क्या एक पूर्ण रूप से भोग करने के लिए या फिर सब कुछ त्याग करके और बिल्कुल संसार से दूर रहना है। So with these thoughts in my mind, I asked Prabhupada this following question. तो इस प्रकार का विचार करते हुए मैंने श्रील प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा। I asked Prabhupada, what is matter and what is spirit? I couldn't quite get the question out right, but that's what I was thinking. But I said, what is matter and what is spirit? तो महाराज ये सोच रहे थे, लेकिन वो उसको प्रश्न में नहीं ला पाए, तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए श्रील प्रभुपाद कि जड़ और चेतन में क्या भेद है? Prabhupada, remember, he was cutting fruit with a knife. और उस समय श्रील प्रभुपाद जी, जैसे पहले बताया महाराज ने, चाकू से फल को काट रहे थे। So Prabhupada held up the knife and he asked me a question. प्रभुपाद ने क्या किया, प्रश्न सुनने के बाद वो चाकू को रख दिया और उल्टा एक प्रश्न पूछा महाराज से। He said, is this knife material or is it spiritual? उन्होंने कहा कि ये चाकू भौतिक है या आध्यात्मिक है? I was a young boy. I didn't know what to say. I was completely, my brain froze, तो महाराज बोले, उस समय बिल्कुल नवयुवक था और मुझे ज्ञात नहीं थी मुझे क्या उत्तर देना चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं बोला। But Prabhupada made the point. He said, this knife in the hand of a surgeon can save your life. प्रभुपाद जी ने कहा कि ये चाकू किसी अगर चिकित्सक के पास में होगा तो वो किसी का जीवन बचा सकते हैं। The same knife in the hand of a robber can cut our throat and take our life. और यही चाकू किसी चोर डाकू के पास में होगा तो वो किसी का वध करके और सब कुछ लूट सकते हैं। So the knife in and of itself is not good nor bad. तो अपने आप में चाकू जो है वो अच्छा या बुरा नहीं है। Rather, it's the consciousness and purpose for which it's used.
बजाय कि किस चेतना से और किस उद्देश्य से इसका उपयोग किया जा रहा है। So the devotees know how to use this world. Everything is meant, Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheswaram. Everything should be used in Krishna's service. तो भक्त जानते हैं कि संसार में सभी कुछ भगवान की सेवा के लिए है। Samsiddhi Haritoshanam. Everything should be utilized for the pleasure of Krishna. सब कुछ संसिद्धिम हरितोषणम भगवान की तुष्टि के लिए है। And Narada Muni says in Srimad Bhagavatam, नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, does not that thing therapeutically treated become the cure of the original disease? Does not a thing therapeutically treated become the cure of the original disease? तो कहते हैं कि ऐसी चीज जो कभी कभी देखते हैं कि जिस चीज से उनको समस्या है उसी चीज से उस चिकित्सा की जाती है उसकी। And the example in the Bhagavatam is if I eat too many milk products, I get indigestion. और इसका उदाहरण दिया गया श्रीमद् भागवतम में कि अगर हम बहुत ज्यादा दूध का पान कर लें तो हमको अपाचन हो सकता है। And the cure is to take some yogurt, little bit of salt, little bit of black pepper, but yogurt is the cure. और उसका इलाज फिर क्या है, उसका उपाय क्या है? अगर थोड़ा सा हम दही उसमें नमक मिलाकर ले लें तो वही उसका उपाय भी है। So milk made me sick, but another milk product cures me. तो दूध से हमें बीमार हुए पड़े हम, और दूध का ही एक अलग रूप जो है दही, उससे हम ठीक हो रहे हैं। The difference is that the yogurt is milk transformed by the yogurt culture. तो जो दही है वो दूध ही है, लेकिन दूध में थोड़ा सा वो जावर मिला करके दही का उसको दही बनाया गया है। So the mood of Rathayatra, the Brajbasi mood, Srimati Radharani's mood, is how I'm transferring my attachment and lust to this material world, and I'm using everything for the service and pleasure of Krishna. तो ये जो ब्रजवासियों का भाव है, रथ यात्रा का जो भाव होना चाहिए, महाराज बता रहे हैं बहुत सुंदर रूप से कि किस प्रकार से हमारी जो अभिलाषा है, जो काम है, इच्छाएं इस भौतिक संसार के प्रति, वो किस प्रकार से आंतरिक रूप से प्रेम भगवान के प्रति उसमें परिवर्तित हो जाए वो। This understanding is a unique gift of Chaitanya Mahaprabhu and of Srimad Bhagavatam. और यही अद्वितीय उपहार चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान करते हैं। I meet people all the time who say, "Oh, I pray to God. Oh, I pray to God." You meet them all the time. "Oh, I pray to God." महाराज कह रहे हैं, मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि मैं भगवान को पूजा करता हूँ, मैं भगवान को पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। What should you say to someone when they say, presenting themselves as all piety, "Oh, I am praying to God"? तो क्या कहेंगे उनको हम जो हमेशा कहते हैं कि मैं तो भगवान की प्रार्थना करता हूँ, पुण्यवान हूँ, भगवान को प्रार्थना करता हूँ। You can ask them very well and good. Thank you very much. उनको बोल सकते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। But the real question is, what are you doing for God? लेकिन वास्तविक प्रश्न है कि ठीक है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप भगवान के लिए कर क्या रहे हैं आप? What are you doing? What are you doing for the service of Krishna? भगवान की सेवा के लिए आप क्या कर रहे हैं? So we can end here. We can take a few questions, but I just want to say one thing in conclusion. तो यहाँ पर महाराज विराम देंगे, कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे, लेकिन निष्कर्ष रूप में कुछ कहना चाहते हैं महाराज। You saw those beautiful shots of Rathayatra. तो हमने बहुत सुंदर रूप से देखा अलग अलग स्थानों पर रथ यात्रा हो रही है पूरे विश्व में। And you know Prabhupada's transcendental slogan, chant and be happy. और हम ये भी समझ पाए प्रभुपाद जी का जो दिव्य जो उनका कहावत है कि सदा जप करिए और प्रसन्न रहिए। I was at a darshan when a newspaper reporter asked Prabhupada a question. एक बार महाराज प्रभुपाद जी के दर्शन के लिए उनके पास में थे, जब संवाददाता ने उनसे एक प्रश्न किया। The newspaper reporter said, "What do you people do for recreation?" समाचार पत्र के संवाददाता ने प्रश्न किया श्री प्रभुपाद से कि आप लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? Prabhupada said, "What?" He said, "Our whole movement
is recreation. श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि क्या हमारा पूरा अभियान ही मनोरंजन है. So the devotees, this is our mood, that by taking up the mood of the Brajbasis, by taking up this mood of let me serve Krishna, we become happy. तो ये हमारा भाव होना चाहिए, जैसे ब्रजवासी भगवान के शुद्ध भक्त कि किस प्रकार से आंतरिक रूप से भगवान की सेवा करें और उसी सेवा में उनको प्रसन्नता मिलती है. You saw that last picture of Srila Prabhupada sitting on the Vyasa, standing on the Vyasa-san, saying, come, chant, encouraging everyone to chant and be happy. तो हमने आखिरी छवि जो देखी श्री प्रभुपाद जी किस प्रकार से रथ के ऊपर सवार होकर और नृत्य कर रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि प्रसन्न जप करिए और प्रसन्न रहिए. This is the mood of Prahlad Maharaj. This is the mood of Srila Prabhupada, that we are completely, our problems are solved. Now let us help others. तो ये श्रील प्रभुपाद जी का भाव है, यही भाव प्रहलाद महाराज ऐसे भक्तों का भाव कि ठीक है मैं तो इसको जान गया हूं, संतुष्ट हूं, लेकिन ये संतुष्टि सबको प्रदान करनी चाहिए. Instead of praying, oh God, give me a new car and give me a house by the sea, we should be praying, how can I serve you? तो बजाय इसके हम प्रार्थना करें कि मुझे आप धन दीजिए, समुद्र के किनारे एक अच्छा मकान दीजिए, ये प्रार्थना करें कि कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, ये बताइए मुझे. The Prabhupada Madhuvisa, one of the early heroes of ISKCON, told me the following. तो महाराज के एक शिष्य जो कि बिल्कुल शुरुआत के आरंभ में उनके अनुयायी थे, उन्होंने एक चीज बताई महाराज को. His name is Madhuvisa. He was a famous kirtan man, one of the first GBCs, and he met Prabhupada in San Francisco. वो मधुविश प्रभु जी जो कि शुरुआत के आरंभ में बहुत अच्छा कीर्तन करते थे और सैन फ्रांसिस्को में श्री प्रभुपाद जी को मिले थे. And he became a devotee. और वो भक्त बन गए वहीं पर. And he asked Prabhupada, he said, Prabhupada, in the Gita, Krishna gives the conditions for one to take up devotional service. वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण गीता में इस प्रकार की स्थिति प्रकट करते हैं जिसमें कि वो भक्ति में जीवन में आगे बढ़े. And Krishna says, one whose reactions to past misdeeds, sinful activities is completely eradicated. और वहां पर ये कंडीशन है, शर्त है कि जिनके पूरे जो पाप हैं वो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं. And one who has a stockpile of pious activities. और जिनके पास बहुत संचित पुण्य है. So no more pop and a big pile of punya. तो कोई पाप नहीं और बहुत बड़ा संचित पुण्य हो. That person can take my devotional service, Krishna says. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही मेरी भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं. But Madhuvisa said, but Prabhupada, that wasn't my condition. तो मधुदेश ने बोला कि प्रभुपाद जी ये तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी उस समय. He said, what to speak of pious acts? I was performing sinful acts till the day I met you. उन्होंने कहा कि पुण्य की क्या बात करें, जब तक जिस दिन तक मैं आपको मिला उस दिन तक सिर्फ मैं पाप ही पाप करता रहा. And Prabhupada's answer was, yes, I have created your good fortune. और श्री प्रभुपाद जी का उत्तर था कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैंने ही आपका पुण्य उसको अर्जित किया है. Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada and the Vaishnavas, ISKCON devotees, they've created our good fortune. तो चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, वैष्णवगण, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल के भक्तगण, इन्होंने हमारे पुण्य को उत्पन्न किया है. So Prabhupada said to Madhuvisa, I've created your good fortune. Therefore, I only ask, because if someone creates good fortune, you have a debt. You owe them something. तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा मधुदेश प्रभु को कि मैंने ही आपका पुण्य उत्पन्न किया है और मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपके लिए सौभाग्य उत्पन्न किया है. So Prabhupada said, yes, you have a debt, and I only ask for one thing. तो आप मेरे ऋणी हैं और मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज. Anyone know what Prabhupada asked for? कोई बता सकते हैं कि क्या कहेंगे प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, क्या मांगा प्रभुपाद जी ने? Prabhupada said, I ask that you go and create good fortune for others.
प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आपसे चाहता हूं कि जैसे मैंने आपका पुण्य उत्पन्न किया वैसे आप भी औरों के पुण्य को उत्पन्न करें. So I've said something, I've tried my best to explain the internal meaning for Rathayatra. तो महाराज कह रहे हैं कि मैंने प्रयास किया कि आपको आंतरिक कारण बताऊं रथ यात्रा का. And the external is that all around the world, Krishna consciousness, ISKCON, through Rathayatra's festivals, we are giving this happiness to the world. और बाह्य रूप से जो भी हमने देखी सब छवि रथ यात्रा जो उत्सव हो रहा है पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ सबको ये आनंद देना चाहते हैं. And as we've received it, we only have one duty. तो जैसे हमको ये मिल रहा है, हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारे पास एक ही कर्तव्य है. And that one duty is to give it to others. और वो कर्तव्य क्या है कि दूसरों को भी हम यही दें. So I'd like to thank the organizers of ISKCON Kuwait. तो महाराज हम भक्तों को यहाँ पर धन्यवाद दे रहे हैं जो इन कार्यक्रम को संयोजित किए हैं. Even in such an externally difficult place, ये बाह्य रूप से बहुत कठिन स्थान है, फिर भी यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं. you've organized a nice Rathayatra and festival. रथ यात्रा और ये उत्सव मनाने के लिए. This is the Vaishnava. ये वैष्णव का भाव होना चाहिए. They can, any difficult place, they make it something wonderful. कि कैसे भी कठिन स्थान हो वहां पर कुछ आश्चर्यचकित ऐसा कुछ उत्सव हो सकता है. Okay, we can end there. We're right on time. Maybe we have one or two questions and then we can be done. Yes, Maharaj. तो महाराज कह रहे हैं कि समय हो रहा है. Let me ask you a question. Just what's the temperature there? Maharaj, now it's more than 50, Maharaj. So outside we have almost. It's like being on that copper planet. Yes, in the 5th canto. Yes, Maharaj. It's like that, Maharaj. It's more than 50 now. Inconceivable. Okay, so we have any questions? Yes, Maharaj. We'll request devotee if they have any question. Maharaj, thank you so much, Maharaj. You have given such a wonderful, the entire. I appreciate all that. Thank you for the kind words. Let's get to the questions. We don't want all that. Don't say all that. Thank you, though. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. तो किसी भक्त को कोई अगर जिज्ञासा है, प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं. बहुत अच्छा अवसर हमारे पास में है महाराज के साथ में. आज बहुत सुंदर रूप से महाराज ने प्रस्तुत किया ये विषय वस्तु. Now, usually everyone is shy, but it just takes one person to ask a question. Then everybody has a question. तो महाराज पहले भी आए थे तो महाराज ने भी यही कहा था कि शुरुआत में लोग शर्माते हैं और कोई एक भक्त जब प्रश्न पूछते हैं तो फिर सब लोग हाथ करके प्रश्न पूछते हैं. So, Mr. Kalyan Gaur, please unmute yourself. You can unmute yourself, please. You have raised the hand. Amal Arjun Prabhu, okay. Yes, Prabhu, now you can unmute yourself. And one last thing, translate this. Not a long question, not a second purport, a simple question. तो बहुत लंबा तात्पर्य नहीं चाहिए प्रश्न का. छोटा सा जो प्रश्न हो सकता है, जो आपका प्रश्न है सिर्फ वही पूछिए. Not a second class, not a purport, but a question. तो कोई दूसरा अस्तर नहीं उसका और तात्पर्य नहीं, सिर्फ प्रश्न पूछिए. Okay. Now that I put you on the spot, Amal Arjun Prabhu, what's your question? Hare Krishna Maharaj, thank you so much. Hare Krishna. I'm a bit lost for words after that, but I'll try. Maharaj, actually, I just wanted to know your experience because I've heard this for the first time that you were present in the 1970 Rathayatra along with Srila Prabhupada. So yes, I was. So can you also share a bit more about that experience, about how you spent the Rathayatra along with Srila Prabhupada? I'll tell you something wonderful. I mean, it was just an amazing thing. Prabhupada actually got out and was dancing. Prabhupada danced so far. But there's many things I could say. But one thing is that the parade went through the park, and then the park, it goes down to the ocean. And there's an auditorium there, big auditorium. And they used to use it for conventions and dance parties and all kinds of things, right? Now, we'll translate that.
था कि महाराज आप रथ यात्रा में उस समय प्रभुपाद जी के साथ में थे 1970 में सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में। तो कृपा करके आप कुछ घटनाएं वहां अगर आपको बता सकते हैं, आप कुछ ऐसी अचंभित घटनाएं। तो महाराज कह रहे कि हाँ, ऐसा हुआ कि जब रथ पे हम लोग आ रहे थे वहां पे, तो ऐसे एक लंबे स्थान से फिर ऊंचे हम लोग नीचे पार की ओर बढ़ रहे थे। And you have to understand the scene, the people that were participating in the Rathayatra. तो आपको ये पूरा दृश्य समझना होगा। Huh? Did you tell them that? They have to appreciate there were blacks, there were hippies, there were motorcycle people, you know, it was just the whole modern hippie Western scene. They were all there. तो इस दृश्य में आप देखेंगे तो सब लोग वहां पर थे, कोई मोटरसाइकिल से, कोई काले गोरे हिप्पीज, जितने भी आधुनिक उस समय के जो समाज के जो नवयुवक थे वो सब वहां पर उपस्थित थे। And when Prabhupada came out on the stage to speak in the auditorium, तो श्री प्रभुपाद जी वहां पर आए और वहां पर जो बड़ा सा एक हॉल था, वहां पर श्री प्रभुपाद जी को कुछ प्रवचन करना था। his presence was so powerful that almost everyone bowed down. तो उनका जो उपस्थिति था वो इतना शक्तिशाली था प्रभुपाद जी का कि सब लोग उनको प्रणाम किए पहले। And it was a wooden floor because it was a dance hall, a dance floor. तो वहां पर सब कुछ लकड़ी का, जो नीचे का समतल था लकड़ी का था, क्योंकि वो डांस करने के लिए बनाया गया था, नृत्य करने के लिए। And when they all bowed down, तो सब लोग वहां पर झुके प्रणाम करने के लिए। and for the motorcycle hell's angels, all their chains fell on the floor. For the hippies, all their marijuana packages, all these things landed on the floor. तो जो मोटरसाइकिल वाले थे, जिनके पास जो हिप्पीज थे, उनके सब चीज जो है वो वहां पर धीरे नादल पर सब कुछ गिर गई वहां पर। And you could hear the sound as all these things fell out of their pockets on the floor. और सब कुछ वो जो गिर रहा था उसकी ध्वनि आ रही थी, सब लोग सुन पा रहे थे क्या गिर रहा है नीचे। And I was thinking, you know, at the time, it's described how when our Brahma saw all the other Brahmas in front of Krishna, and they all bowed down and all their helmets made that sound. So this was a Western representation of that sound of everyone bowing down. तो महाराज बता रहे हैं बहुत सुंदर रूप से कि जैसे हम सब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास जब सभी ब्रह्मा जी लोग जाते हैं, चतुर्मुख और हजारों हजारों मुख वाले, जब वो प्रणाम करते हैं भगवान को, तो उनका पूरा जो उनका जो मुकुट होता है, वो मुकुट जब गिरता है शरीर पर, धरित्री पर, तो बहुत आवाज करता है। वैसे ही वहां पर उन लोग के सारी चीजें आवाज कर रही थी, जो कि आधुनिक समाज की मुकुट थे उनके ब्रह्मा जी जैसे। And to this day, I remember the first thing Prabhupada said. और महाराज कह रहे कि आज तक मुझे वो याद है जो पहली बार प्रभुपाद जी ने वहां पर कुछ कहा था, मुझे याद है अभी भी। Now you have to understand, you know, Prabhupada, although he roared like a lion, he wasn't very big size. तो महाराज बता रहे कि श्री प्रभुपाद जी बिल्कुल सिंह की तरह गरजते थे, लेकिन वो बहुत, उनकी कद काठी बहुत लंबी ऊंची नहीं थी। And he was elderly. और वो वृद्ध भी थे आयु में। He was obviously a gentle scholar. निश्चित रूप से वो एक बहुत ही सभ्य विद्वान थे। And here's Prabhupada on the stage. और श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर इस समय स्टेज पर वहां पर खड़े हैं। And he's looking out at this ocean, thousands, hippies, hell's angels, motorcycle riders, just, you know, this whole scene, and he's looking out at them. और प्रभुपाद जी देख रहे हैं वहां पर हजारों हजारों लोग, वहां के हिप्पीज, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले, ये सब ऐसे लोग, आधुनिक लोग जो हैं, नवयुवक, वहां पर सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, प्रणाम कर रहे हैं। And Prabhupada's first words were, "My dear frustrated youth of America." और प्रभुपाद जी का पहला वाक्य था कि मेरे प्रिय निराश नवयुवक अमेरिका के। And it's the truth. We had everything. We had education, we had money, we had power, but we had a big hole in our heart. What is the meaning of life, and what is it all about? And Prabhupada gave us the answer and the message. और ये बिल्कुल सत्य है, महाराज कह रहे हैं कि हम लोग के पास सब कुछ था, अच्छी शिक्षा, धन, वैभव, सब कुछ,
लेकिन हमारे हृदय में इतना खालीपन था कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए हमें ज्ञात नहीं था. As soon as he said, "My dear frustrated youth of America," the whole audience burst into applause. जैसे ही महाराज ने कहा कि मेरे प्रिय अमेरिका के निराश नवयुवकों नवयुवतियां, सभी लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के लिए और उनका जय जयगान करने के लिए सब बिल्कुल चिल्लाए बहुत जोर से. It was a magic moment. तो ये बड़ा ही जादूकारी ये समय था, क्षण था वहां का. So we can take one more question and then I have to go. एक और प्रश्न ले सकते हैं महाराज, उसके बाद महाराज को फिर जाना होगा दूसरे सेवा के लिए. If we don't have a question, it's okay, but if somebody has a question. और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर. I scared everybody off. Maharaj explained so nicely. I don't think Maharaj now I cannot see any hand All right, raised. we can end there. Prabhus, in spite of the 50-degree heat, in spite of the oppressive government, the Vaishnavas are holding Rathayatra and feeling blissful. This is a most wonderful thing. Hare Krishna, Prabhus. Thank you so much, Maharaj. We like to extend our gratitude. हम सभी मिलके See महाराज you का later. धन्यवाद. Bye-bye. Hare Krishna.